everyone, how are you all? प्यारे बच्चों कैसे हो? Welcome to all the viewers, subscribers. Let us solve a very beautiful problem of resonance column. What is resonance column? I will tell you if you want in the next lecture. But in this lecture, I am going to tell you the problem related to application of resonance column. So in the question, like it is saying that in resonance column, first resonance is obtained at a water level of 24 centimeter. So L1 is equal to 24 centimeter. It is given in the problem. L2 is equal to the second resonance is obtained at a water level of 73 centimeter. You need to find the speed of sound. We need to calculate. C निकालना है आपको, velocity of speed of sound निकालना है, and radius of pipe. You need to calculate R also. What is R? And assuming the frequency of tuning fork. It is mentioned in the problem frequency of tuning fork is 330 Hz. Now I am going to tell you the formula, which formula you have to apply for finding the velocity speed of sound. First resonance and second resonance is mentioned in the problem. V is equal to 2ft is bracket L2 minus L1. This formula will give you the what? Speed of sound. What is L1? L1 is the length at which first resonance obtained. L2 is the length at which second resonance obtained. For finding the radius, if first resonance and second resonance is mentioned in the problem, for finding the radius, you have to use this expression L2 minus 3L1 divided by 1.2. I hope you can easily calculate this expression. It is very easy, but I have tell you because without telling this, you can't solve this question. So resonance column has radius of pipe. Resonance column basically is a pipe. जो बांसुरी होती है ना, ये जो बांसुरी होती है ऐसे करके, ये जो होती है, ये बेसिकली का एक रेजोनेंस कॉलम है. और यहाँ पर पानी भरा होता है, ऐसे होता है कुछ मैं आपको बताऊँ. ऐसे होता है, ये आपका पाइप है. यहाँ से ये आपका क्या कहते हैं, वॉल लगा दिया है ऐसे करके. ये आपका ओवरहेड टैंक है, दिस ओवरहेड टैंक. यहाँ से पानी आ रहा है आपका, और ये ऐसे करके लगा हुआ है इसमें. यह वॉल लगा दिया है, ये पानी भरा हुआ है. तो धीमे धीमे ओवरहेड टैंक से पानी जा रहा है, और ये ट्यूनिंग फॉर्क है. ये ट्यूनिंग फॉर्क है आपका. इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप वाइब्रेट कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, और पानी का लेवल आप धीमे धीमे क्या है, पहले L1 था, फिर इस L1 लेंथ पे आपको रेजोनेंस मिला, फिर पानी का लेवल आपने और कम कर दिया, तो आपको L2 लेंथ मिल गया. तो ऐसे करके आपने क्या करा, L1 L2 फाइंड कर लिया, जिसपे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई हो. मतलब रेजोनेंस क्या होता है, बेसिकली रेजोनेंस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच whatever is the frequency of tuning fork is matches with the frequency of this appliance or substance. जैसे ये वाटर कॉलम रेजोनेंस कॉलम बन रहा है ना, तो ये रेजोनेंस कॉलम इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए. So L1 L2 is mentioned in the problem. I can show you also. This is L1. पानी का लेवल पहले इतना था, तो ये आपका L1 था. तो वाटर लेवल थोड़ा सा आपने डाउन कर दिया, तो आपका पानी थोड़ा सा नीचे चले गया, तो आपका L2 ये हो गया. ठीक है, वॉट एवर एल्स, L1 कम होगा, L2 ज्यादा होगा. नाउ अप्लाई दिस एक्सप्रेशन. वेरी इजी. अगर आप कहेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये कैसे आया, बट इन दिस लेक्चर यू नीड टू फोकस ओनली दीज थिंग्स. नाउ सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल we know very well V is equal to क्या होता है, 2ft frequency of tuning fork, that is 330 Hz, multiply L2 minus L1. What is L2? 73 minus 24. After solving this, you will get what is 323 meter per second. This is the speed of sound. Okay, for finding the R, you have to use above expression. L2 minus 3L1, 73 minus 3L1, 24, divide by 1.2.
So the radius of the pipe comes out to be how much? When you solve 0.83 centimeters. So this much should be the radius of the pipe for these resonance to be occurred. Okay. अगर ये रेजोनेंस होना चाहते हैं तो आपको इतना पाइप का रेडियस चाहिए. सो आपको समझ में आया? तो अच्छे से इसको और दोबारा से देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, बट प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड आपकी हेल्प हो रही है, किसी और बच्चे की भी हेल्प हो जाए, उसको भी शेयर करिए. नॉलेज को स्प्रेड करना सीखिए. नॉलेज किसी एक की नहीं है, सबको स्प्रेड करना चाहिए. नॉलेज एक महक है, एक खुशबू है, जिसको हमको हर जगह बांटना चाहिए. बांटने से ही बढ़ती है. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.